और एम्प्लॉय एंटिटी है उसका रिकॉर्ड होगा तो वो उसका इंस्टेंट होगा। रिकॉर्ड्स जो हैं वो फिक्स्ड भी हो सकते हैं और वेरिएबल लेंथ के रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। रिकॉर्ड्स के अंदर फील्ड्स होती हैं जिनकी वैल्यूज़ होती हैं कोई सम स्पेसिफिक टाइप की, लाइक कोई नंबर हो सकता है, कोई डेट फॉर्मेट हो सकता है, टाइम फॉर्मेट हो सकता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट हो सकता है। अब ये जो फील्ड्स हैं इनकी लेंथ या तो फिक्स होगी या वेरिएबल लेंथ होगी। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि एक रिकॉर्ड के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल लेंथ फील्ड्स हों और उनको मिक्स कर दिया जाए इनटू वन रिकॉर्ड। तो इस सूरत में सेपरेटर कैरेक्टर्स और लेंथ फील्ड्स आर नीडेड, जो बताती हैं कि ये स्पेसिफिक आइटम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और अगर ये ना हो तो हम रिकॉर्ड को पार्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ब्लॉकिंग। तो ब्लॉकिंग का मतलब है ये एक स्टोरेज यूनिट है, रेफर्स टू स्टोरिंग अ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन वन ब्लॉक ऑन द डिस्क। तो जो डेटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क के ऊपर वो ब्लॉक्स की सूरत में होता है। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हम एक ब्लॉक में प्लेस कर सकते हैं। इसको ब्लॉकिंग फैक्टर BFR भी कहते हैं। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक, कि एक ब्लॉक के अंदर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। एक ब्लॉक के अंदर एम्प्टी स्पेस भी हो सकती है, लाइक जो ब्लॉक्स होते हैं वो फिक्स्ड लेंथ के हैं, और अगर किसी ब्लॉक में जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उसकी फिक्स लेंथ से कम है तो वहाँ पे एम्प्टी स्पेस हो सकती है। और कुछ जो रिकॉर्ड्स हैं वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स के ऊपर भी हो सकते हैं, और ऐसे रिकॉर्ड्स को स्पैन्ड रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो ऐसे रिकॉर्ड्स जिनका साइज ब्लॉक साइज से बढ़ जाता है और इस वजह से उनको एक से ज़्यादा ब्लॉक्स में प्लेस किया जाता है, ऐसे रिकॉर्ड्स को स्पैन्ड रिकॉर्ड्स कहा जाता है। फाइल्स ऑफ रिकॉर्ड्स। फाइल्स क्या होती हैं? फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स where each record is a collection of data values. तो जिस तरह एक रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट डेटा आइटम्स, अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट रिकॉर्ड्स। तो लाइक एक हमारे पास स्टूडेंट का इंस्टेंस है, दैट इज़ वन रिकॉर्ड, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं तो उनको हम एक फाइल में स्टोर करेंगे और उसको हम स्टूडेंट फाइल या कोई और फाइल का नाम दे सकते हैं। फाइल डिस्क्रिप्टर क्या होता है, या फाइल हेडर भी उसको कहा जाता है। ये जो अदर देन डेटा हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, लाइक एक फाइल है उसमें स्टूडेंट एंटिटी की रिकॉर्ड्स हैं, तो जो फाइल हेडर होगा स्टूडेंट फाइल का या फाइल डिस्क्रिप्टर होगा वो फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा, लाइक इसमें फील्ड नेम्स कितने हैं, उनकी डेटा टाइप्स क्या हैं, और फाइल का एड्रेस क्या है ऑन द ब्लॉक ऑन डिस्क। तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं दे आर स्टोर्ड ऑन डिस्क ब्लॉक्स, और इसमें जो ब्लॉकिंग फैक्टर है BFR फॉर अ फाइल इज द एवरेज नंबर ऑफ फाइल रिकॉर्ड्स स्टोर्ड इन अ डिस्क ब्लॉक। तो ब्लॉकिंग फैक्टर का मतलब है कि एक फाइल के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं वो एवरेज नंबर ऑफ फाइल रिकॉर्ड्स एक डिस्क ब्लॉक पे कितने हैं। एक फाइल जो है उसके अंदर फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं या वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। फाइल रिकॉर्ड्स जो हैं अनस्पैन्ड हो सकते हैं या स्पैन्ड हो सकते हैं। अनस्पैन्ड का मतलब है कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं दे आर नॉट ऑन टू ब्लॉक्स। अनस्पैन्ड रिकॉर्ड्स ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो एक ही ब्लॉक के अंदर आते हैं और उनका जो साइज है ब्लॉक साइज से एक्सीड नहीं करता। स्पैन्ड जो होते हैं, स्पैन्ड फाइल रिकॉर्ड्स ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं
जिनमें जो रिकॉर्ड है वो एक ब्लॉक के ऊपर स्टोर नहीं हो सकता एंड वी नीड नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो ऐसे रिकॉर्ड्स को जो एक से ज़्यादा ब्लॉक्स के ऊपर आए स्पैन्ड रिकॉर्ड्स कहा जाता है। जो फिजिकल डिस्क ब्लॉक्स हैं दैट आर all allocated to hold the records of a file can be contiguous, linked or indexed. So in a file of fixed length records, all records have the same format. Usually unspanned blocking is used with such files. Files of variable length records require additional information to be stored in each record, such as separator, characters, and field types. Usually spanned blocking is used with such files. तो हमारे पास दो तरह के रिकॉर्ड्स हैं, अनस्पैन्ड और स्पैन्ड। अनस्पैन्ड रिकॉर्ड से मुराद ये है कि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक ही ब्लॉक में स्टोर होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो फिक्स लेंथ रिकॉर्ड्स होते हैं ये अनस्पैन्ड होते हैं, जबकि वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स जो हैं दे आर ऑन स्पैन्ड टाइप, like they have to be stored on most likely on number of blocks, क्योंकि उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होती है जो बताती है कि कोई जो डेटा आइटम है या फील्ड है वो कहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो हमने अभी तक देखा रिकॉर्ड क्या होता है, ब्लॉकिंग क्या मतलब है और फाइल्स जो हैं उनको कैसे स्टोर किया जाता है। उसके अलावा फिर हमने फाइल रिकॉर्ड्स को देखा कि हमारे पास दो तरह के फाइल रिकॉर्ड्स हैं, स्पैन्ड और अनस्पैन्ड। नेक्स्ट ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं। अब फाइल्स को हमने हार्ड डिस्क में स्टोर कर लिया, अब हार्ड डिस्क पे या तो फाइल्स जो हैं स्पैन्ड हैं या अनस्पैन्ड है। अब उनके ऊपर ऑपरेशन क्या हो सकते हैं। लाइक फर्स्ट ऑपरेशन जो किसी भी फाइल के ऊपर हो सकता है वो ओपन है। आप किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। readies the file for access and associate a pointer that will refer to a current file record at each point in time। ये दूसरा जो इस पे ऑपरेशन है वो फाइंड का है। तो जो फर्स्ट फाइल रिकॉर्ड को जो हम सर्च करते हैं दैट सेटिस्फाई अ सर्टेन कंडीशन एंड मेक्स इट द करंट फाइल रिकॉर्ड। तो हम कोई कंडीशन के ज़रिए सर्च करते हैं रिकॉर्ड्स को, तो ऐसा कोई भी रिकॉर्ड जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो तो वो रिकॉर्ड हमारे सामने आएगा आफ्टर अप्लाइंग फाइंड ऑपरेशन। नेक्स्ट है फाइंड नेक्स्ट ऑपरेशन। तो फाइंड नेक्स्ट ऑपरेशन से मुराद है इट विल सर्च फॉर द नेक्स्ट फाइल रिकॉर्ड फ्रॉम द करंट रिकॉर्ड दैट सेटिस्फाई अ सर्टेन कंडीशन and makes it the current file record. Then read operation, it will read the current file record into a program variable. Insert means it will insert a new record into the file and makes it the current file record.
Delete operation will remove the current file record from the file, usually by making the record to indicate that it is no longer valid. Modify will change the value of some fields of the current file record. And close will terminate access to the file. Reorganize का मतलब है कि जो आपका फाइल रिकॉर्ड का जितना भी स्ट्रक्चर है, it will be reorganized because some files are modified or deleted. तो accordingly जो है उसको फॉर्मेट को reorganize किया जाएगा. Read the files blocks in order of a specific field of the file. तो ये ऑपरेशंस हैं जो किसी भी फाइल के ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं. Methods for organizing records of a file on disk. तो हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम रिकॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑन द डिस्क, लाइक हीप फाइल, सॉर्टेड फाइल, हैशिंग टेक्निक एंड RAID. अनऑर्डर्ड फाइल को हीप भी कहते हैं या पाइल फाइल. इसमें जो भी नया रिकॉर्ड होगा उसको एंड ऑफ द फाइल इंसर्ट किया जाएगा. A linear search through the file record is necessary to search for a record. This requires reading and searching half the file blocks on the average and is hence quite expensive. Record insertion is quite efficient. Reading the records in order of a particular field requires sorting the file records. Next, जो स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए हम फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑन द डिस्क इज ऑर्डर्ड फाइल. इसको सीक्वेंशियल फाइल भी कहते हैं. इसमें फाइल रिकॉर्ड्स जो हैं वो सॉर्ट किए जाते हैं, जो जिसके ज़रिए जो फील्ड्स हैं वो एक ऑर्डर में आ जाती हैं. इसमें जो इंसर्शन है वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें जो भी रिकॉर्ड होगा वो करेक्ट ऑर्डर में होगा और करेक्ट ऑर्डर में करने के लिए उसको जो पॉइंटर है उसको मूव करना होगा आफ्टर सम आइटरेशंस. तो इसके लिए जो एक कॉमन टेक्निक है कि एक सेपरेट अनऑर्डर्ड ओवरफ्लो या ट्रांजैक्शन फाइल रखी जाए, ताकि जब भी नए रिकॉर्ड इंसर्ट किए जाएं तो उससे जो ओवरफ्लो फाइल है उससे इंसर्शन एफिशिएंसी बेहतर हो जाए. और ये जो फाइल है जो ओवरफ्लो या ट्रांजैक्शन फाइल है, इसको मेन ऑर्डर फाइल के साथ मर्ज किया जाता है. इसमें जो सर्च मेथड है वो बाइनरी सर्च मेथड कैन बी यूज्ड टू सर्च फॉर अ रिकॉर्ड ऑन इट्स ऑर्डरिंग फील्ड. इसमें जो वैल्यूज होती हैं दिस रिक्वायर्स रीडिंग एंड सर्चिंग लॉग्स ऑफ द फाइल्स ब्लॉक्स ऑन द एवरेज and improvement over linear search. Reading the records in order of the ordering field is quite efficient as compared to unordered files. तो ये ordered files की example है जिसमें ascending order में like block 1 में by name इसको sort किया गया. Next है average access time. ये जो टेबल है इसमें हम देख सकते हैं जो एवरेज एक्सेस टाइम है किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल को अगर हमने एक्सेस करना हो तो उसमें कितना टाइम लगता है. तो हीप जो कि अनऑर्डर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जो सर्च मेथड है वो सीक्वेंशियल स्कैन है या लीनियर सर्च है. तो इसमें जो एवरेज ब्लॉक्स टू एक्सेस अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड के नंबर ऑफ कितनी हमें आइट्रेशन की करनी पड़ती हैं वो b/2 है. ऑर्डर्ड के अंदर जो अगर हम सीक्वेंशियल स्कैन यूज़ करें तो इसमें भी जो हमें
جو ایوریج بلاکس ہیں جن کو ہمیں ایکسیس کرنا پڑے گا وہ بھی B/2 ہیں. اگر آرڈرڈ میں ہم بائنری سرچ اپلائی کرتے ہیں تو دیر مائٹ بی امپرومنٹ، اور جو امپرومنٹ ہوگی وہ log2 آف B ہوگی. تو اس میں جو بیٹر میتھڈ ہے وہ بائنری سرچ کا ہے، ایکسیس میتھڈ. اس کے ذریعے ہم ایفیشینٹلی ریکارڈس کو، فائلس کو سرچ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہیشڈ فائلس. ہیش فائلس از کالڈ ایکسٹرنل ہیشنگ. اس میں جو بلاکس ہیں، جو فائل بلاکس ہیں، ان کو m ایکول سائزڈ بلاکس میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور they are on numbered buckets on bucket, and they are bucket numbers are bucket naught to bucket m-1. جو ایک بکٹ ہوتی ہے وہ عموماً جو ہے ایک فکس نمبر آف ڈسک بلاک کے اوپر ہوتی ہے، یعنی ایک بکٹ ایک ڈسک بلاک کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور ون آف دی فائل فیلڈ از designated to be the hash key. Hash key is a unique value from which we can access the records. The records with hash key value is stored in bucket where I is equal to h of k, and h is the hashing function. Search is very efficient on the hash key. Collisions occur when a new record hashes to a bucket that is already full. An overflow file is kept for storing such records. Overflow records that hash to each bucket can be linked together. There are numerous methods for collision resolution, including the following. پہلا میتھڈ ہے اوپن ایڈریسنگ. یہ مور اور لیس وہی میتھڈ ہیں جو ہیشنگ پرابلمس کو ریزالو کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. اوپن ایڈریسنگ کا مطلب ہے proceeding from the occupied position specified by the hash address. The program checks the subsequent positions in order until an unused empty position is found. Chaining for this method, various overflow locations are kept, usually by extending the array with several overflow positions. In addition, a pointer new record in an unused overflow location and setting the pointer of the occupied hash address location to the address of that overflow location. Multiple hashing means the program applies a second hash function if the first result in a collision. If another collision results, the program uses open addressing or applies a third hash function and then uses open addressing if necessary. تو یہ پروسیجر ہے. وی ہیو بکٹ نمبر 0 to m-1 اور اس میں بلاک ایڈریسز ہیں آن ڈسک. Hash files to reduce overflow records. A hash file is typically kept 70 to 80% full. The hash function should distribute the records uniformly among the buckets. Otherwise, search time will be increased because many overflow records will exist. Main disadvantage of static external hashing: fixed number of buckets m is a problem if the number of records in the file grows or shrinks. Ordered access on the hash key is quite inefficient, requires sorting the records. تو یہ overflow buckets ہیں. They keep record pointers for each buckets, and from these overflow buckets unused records can be found. Parallelizing disk access using RAID technology. تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ڈسکس ہیں ان کی اگر ہم ہیرارکی دیکھیں تو جو موسٹ ایکسپینسو ڈسک ہیں دے آر آن ٹاپ ہیرارکی بٹ دے ہیو لیس اسٹوریج. تو ہمیں ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے عموماً میگنیٹک ڈسک کو یا زپ ڈرائیو، زپ ڈسک کو یوز کیا جاتا ہے. تو لیکن جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں ڈیٹا اسٹوریج کے لیے وی انکاؤنٹر اندر پرابلم دیٹ از سلو ایکسیس ٹائم، سلو سیک ٹائم.
तो ये एक प्रॉब्लम है स्टोरेज का, जिसको हम काउंटर करते हैं बाय यूजिंग रेड टेक्नोलॉजी। रेड का मतलब है रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। The main goal of a RAID is to even out the wildly different rates of performance improvement of disk against those in memory and microprocessors. तो जो माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ डिफरेंट मेमोरी टाइप्स हैं लाइक मेन मेमोरी, रैम चिप्स एंड कैशे चिप्स, दे आर वेरी स्पीडी एज कंपेयर टू मैग्नेटिक डिस्क। तो उनके दरमियान में जो डिफरेंस है, जो बॉटल नेक है एक्सेस टाइम का, रिकॉर्ड इंसर्शन का, रिकॉर्ड सर्चिंग का, उसको ख़त्म करने के लिए रेड को यूज़ किया जाता है। रेड के अंदर डिफरेंट लेवल हैं और उन लेवल्स को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत सी जो डिस्क हैं, दे आर कंबाइंड टुगेदर बट दे एक्ट लाइक वन हार्ड डिस्क। अब डिफरेंट हार्ड डिस्क को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि उसके ऊपर हम जो डेटा है कंकरेंटली राइट कर सकते हैं। जो एक रिकॉर्ड है हम उसको नंबर ऑफ डिस्क के ऊपर जो है वो स्टोर कर सकते हैं, या नंबर ऑफ जो पोर्शंस ऑफ ब्लॉक्स हैं उनको सर्च कर सकते हैं फॉर वन रिकॉर्ड। तो इसमें जो डेटा स्ट्रिपिंग जो है वो यूज़ किया जाता है। डेटा स्ट्रिपिंग एक कॉन्सेप्ट है जो यूटिलाइज करता है पैरेललिज्म को, ताकि डिस्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। Data stripping distributes data transparently over multiple disks to make them appear as a single large fast disk. तो नंबर ऑफ डिस्क जो हैं वो यूज़ की जाती हैं और उनके ऊपर पैरेलल डेटा राइट या रीड होता है, और इस वजह से जो डेटा एक्सेस टाइम है, डेटा रीड टाइम है या राइट टाइम है, वो इम्प्रूव हो जाता है, और जो बॉटलनेक है एक्सेस टाइम का वो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें हमारे पास जो लाइक ये ए है, इसमें दो तरह से डेटा राइट होता है, बिट लेवल के ऊपर या ब्लॉक लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे जो बिट लेवल के ऊपर जो है स्ट्रिपिंग यूज़ होती है अक्रॉस 4 डिस्क। डिस्क 0 है, 1, 2 एंड 3, और इस पे हम डेटा रीड या राइट कर सकते हैं। ब्लॉक लेवल के ऊपर भी स्ट्रिपिंग हो सकती है, और इसमें भी 4 डिस्क यूज़ हो रही हैं जिसके ज़रिए हम डेटा को रीड राइट कर सकते हैं। रेड को एक्चुअली ओरिजिनली तो यही था, रिडेंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, लेकिन अभी जो इसकी जो वेल नॉन इसको एब्रीवेट किया जाता है वो रिडेंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क से किया जाता है। तो इसमें हम नंबर ऑफ डिस्क को ऑर्गेनाइज करते हैं और इसको व्यू करते हैं एज अ सिंगल डिस्क ऑफ हाई कैपेसिटी एंड हाई स्पीड बाय यूजिंग मल्टीपल डिस्क इन पैरेलल। High reliability by storing data redundantly so that data can be recovered if even if a disk is failed। तो हम इसमें बैकअप भी मैनेज कर रहे होते हैं। डेटा जो है मल्टीपल डिस्क के ऊपर स्टोर होता है, तो कोई एक डिस्क अगर फेल होती है तो वी हैव another disk to recover data। The chance that some disk out of a set of n disk will fail is much higher than the chance that a specific single disk will fail। That is, a system with 100 disks, each with mean time to failure of 100,000 hours, approximately 11 years, will have a system mean time to failure of 1,000 hours, approximately 41 days. Technique for using redundancy to avoid data loss are critical with large number of disks।
So originally this is a cost-effective alternative to large expensive disks. تو آج کل جو ریڈ ہے آئی ٹی سینٹرز میں ڈیٹا سینٹرز میں اس کو یوز کیا جاتا ہے ڈیو ٹو ریلائبلٹی. اس کے ذریعے ہم ریڈ کے ذریعے ریڈنڈنسی جو ہے وہ ایکوائر کرتے ہیں. اس میں ہم ایکسٹرا انفارمیشن جو ہے اس کو اسٹور کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارا ڈیٹا کسی وجہ سے لوز ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کی انفارمیشن ہے جس کے ذریعے ہم ڈیٹا کو ریکور کر سکتے ہیں. اس میں ہم مررنگ یا شیڈوئنگ کر سکتے ہیں. مررنگ کا مطلب ہے کہ ہم ہر ڈسک کو ڈپلیکیٹ کریں، اس کو مرر کریں. تو ایک جو لاجیکل ڈسک ہے اس میں 2 فزیکل ڈسک ہو سکتی ہیں. تو ہر جو رائٹ آپریشن ہے وہ دونوں ڈسک کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ریڈ آپریشن ہے وہ بھی دونوں لاجیکل جو ڈسک ہیں ان کے اوپر اپلائی ہو سکتا ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک ڈسک فیل ہوتی ہے تو ڈیٹا پھر بھی اویلیبل ہوگا دوسری ڈسک کے اندر. اور اگر ہمارے پاس مرر ڈسک ہے تو پھر بھی ہم سسٹم کو ریپیئر کر سکتے ہیں. اور جو ساری ڈسک ہیں لائک مرر ڈسک بھی ہیں اور جو لاجیکل ڈسک بیک اپ ہے وہ سارا کچھ اگر جو ہے وہ لاس ہوتا ہے دیٹ از ویری ریئر انسیڈنٹ ٹو ہیپن. تو یہ تب یہ ہوتا ہے جب کہیں کسی ڈیٹا سینٹر میں آئی ٹی سینٹر میں آگ لگ جائے یا کوئی ارتھ کوئک آ جائے یا بلڈنگ کولیپس کر جائے یا کوئی الیکٹریکل پاور سرچ کی وجہ سے سارا سسٹم جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے. تو 2 مین گول ہیں پیراللزم کے ڈسک سسٹم کے اندر. نمبر 1 ہے لوڈ بیلنس. لوڈ بیلنس ملٹیپل اسمال ایکسیس ٹو انکریز دی تھرو پٹ. تو اسمال ایکسیسز آر پرووائڈیڈ تاکہ لوڈ کو بیلنس کیا جائے، نہ کہ کسی ایک ہی ڈسک کے اوپر ڈیٹا سارا ریڈ یا رائٹ کیا جائے. پیرالائز لارج ایکسیسز ٹو ریڈیوس response time. Improve transfer rate by stripping data across multiple disks. تو 2 طرح کی stripping ہے، bit level stripping and block level stripping. In bit level stripping, splits the bits of each byte across multiple disks in an array of 8 disks. Write bit I of each byte to disk I. Each access can read data at 8 times the rate of single disk, but seek access time worse than for a single disk because the operation need to read from 8 disks. Bit level stripping is not used much anymore due to these problems. Next is block level stripping. In block level stripping we have n disks. Log I of a file goes to disk I mod n plus 1. Requests for different blocks can run in parallel. If the block request on different disks, a request for a long sequence of blocks can utilize all disks in parallel. We have different RAID levels to address different demands. RAID levels are the schemes to provide redundancy at lower cost by using disk stripping combined with parity bits. Parity bits are used to recover data in case of data loss. Different RAID organizations or RAID levels have differing cost, performance, and reliability characteristics. Let's compare all these RAID levels. First RAID level is RAID level 0, and we apply block stripping non-redundant. And they are used in high performance application where data loss is not critical because we are using non-redundant disk. So we need to take risk of data lost. But this is the scenario where we don't have a critical situation if we lose data.
Next RAID level is RAID level 1. Here we have mirror disks with block stripping, and they provide best write performance, popular for applications such as storing log files in a database system. RAID level 2, memory style error correcting codes with bit stripping. But in RAID level 3, bit interleaved parity is used. A single parity bit is enough for error correction, not just detection, since we know which disk has failed. When writing data, corresponding parity bits must also be computed and write to a parity bit disk. To recover data in a damaged disk, compute XOR of bits from other disks, including parity bit disk. In RAID level 3, we have faster data transfer than with a single disk, but fewer I/O per second since every disk must participate in every I/O. Subsumes level 2 provides all its benefits at lower cost. Then we have level 4. RAID level 4, where we have block interleaved parity. इसमें हम ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग यूज़ करते हैं और पेरिटी ब्लॉक्स को हम मेंटेन रखते हैं एक और फाइल के ऊपर। लाइक यहाँ पे जिस तरह डायग्राम में है कि ये जो डिस्क है ये पेरिटी बिट्स के लिए है, पेरिटी ब्लॉक्स के लिए है, और ये जो पेरिटी ब्लॉक्स हैं ये यूज़ होते हैं बाकी रिमेनिंग डिस्क के लिए। जब हमने डेटा राइट करना हो तो corresponding block of parity bits must also be computed and returned to parity disk. To find value of a damaged block, compute XOR of bits from corresponding blocks, including parity blocks from other disks. RAID level 4 provides higher I/O rates for independent block read than level 3. Block read goes to a single disk, so blocks stored on a different disk can be read in parallel. RAID level 4 provides high transfer rates for reads of multiple blocks, then no stripping. Before we write a block, parity data must be computed and can be done by using old parity block. Old value of current block and new value of current block, so it becomes 2 block reads plus 2 block writes, or by computing the parity value using the new values of blocks corresponding to the parity blocks. More efficient for writing large amount of data sequentially. तो parity blocks जो हैं they can become a bottleneck for independent block writes since every block write also write to parity disk. Next जो है वो RAID level 5 है और इसमें भी block interleaved distributed parity यूज होती है। इसमें जो partitions होती हैं और उनके दरमियान में जो parity होती है वो n+1 डिस्क है और इसमें जो डेटा है वो n डिस्क में स्टोर नहीं होता बल्कि पेरिटी जो है वो एक डिस्क में स्टोर होती है। इसको यूज़ किया जाता है विद 5 डिस्क
اس میں جو پیرٹی بلاک ہوتے ہیں فار n سینٹ آف بلاک اس کو اسٹور کیا جاتا ہے ایک ڈسک کے اندر n mod 5+1 with the data block stored on the other 4 disks. تو یہ ایک ڈائیگرام ہے جس میں پی ناٹ جو دس از دا فرسٹ فائل فرسٹ ڈسک اس پہ 4 8 12 16 رائٹ ہوگا دین 0 پھر اس کے بعد پیرٹی 1 P1 دین 5 values then parity 2 then we have 5 values parity 3 اور اسی طرح جو پیرٹیز ہیں جب ریکارڈز لکھے جائیں گے اس کے بعد پیرٹی بٹ بھی ایڈ ہوگا. ریڈ لیول 5 میں ہمارے پاس جو آئیو ریٹس ہیں دے آر ہائر دین لیول 4. اس میں جو block writes they occur in parallel if the blocks and their parity blocks are on different disks. Subsumes level 4 provides same benefits but avoid bottleneck of parity disk. Next is RAID level 6. It provides P plus Q redundancy. Like 5 but stores extra redundant information to guard against multiple disk failure, better reliable than level 5 at an higher cost. And this is not used as widely. اب فیکٹرز کیا ہیں ریڈ لیول کو ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ہم نے ریڈ لیول دیکھے ریڈ لیول 6 5 4 3 2 0 تو کیا کرائٹیریا ہے ہم کس کرائٹیریا کے اوپر کسی اسپیسیفک ریڈ لیول کو اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں پہلے ہے مانیٹری کاسٹ, سیکنڈ از پرفارمنس کہ نمبر آف آئی آپریشن جو پر سیکنڈ ہے وہ کتنے ہو جاتے ہیں اور اس میں جو نارمل آپریشن ہوتا ہے اس میں کتنی بینڈ وڈتھ ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور اگر کوئی پرفارمنس فیلئر ہے تو وہ کیا ہے, اس کے بعد یہ اپ ٹائم کتنی دیر میں آتا ہے, اور پرفارمنس ڈیورنگ ری بلڈ آف فیل ڈسک انکلوڈنگ ٹائم ٹیکن ٹو ری بلڈ فائل ڈسک. ریڈ 0 وہاں پہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ ڈیٹا سیفٹی جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. اس میں جو ڈیٹا ہے اس کو ریکور کیا جا سکتا ہے فرام ادر سورسز. جو لیول 2 اینڈ لیول 4 ہیں they are never used since they are subsumed by 3 and 5. Level 3 is not used anymore since bit stripping forces single block reads to access all disk blocks, wasting single disk arm movement, which block stripping level 5 avoids. Level 6 is rarely used since level 1 and 5 offer adequate resources for most applications. Level 1 provides much better writing performance than level 5. In level 5, we require at least 2 blocks reads and 2 blocks writes to write a single block, whereas level 1 only requires 2 block writes. Level 1 preferred for high update environments such as log disk. Level 1 had higher storage to cost than level 5. Disk drive capabilities increasing rapidly 50% per year, where each disk access time have decreased much less. I/O requirements have increased greatly for web servers when enough disks have been bought to satisfy required rate of they often have spare storage capacity. So there is often no extra money cost for level 1. اور ریڈ کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ سافٹ ویئر کے ذریعے کی جاتی ہے اور اس میں کوئی اسپیشل ہارڈ ویئر کی سپورٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ریڈ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں اسپیشل ہارڈ ویئر یوز کیا جاتا ہے اور اس میں نان وولاٹائل ریم ہوتی ہے جو ریکارڈ کرتی ہے رائٹس دیٹ آر بینگ ایگزیکیوٹیڈ.
لیکن جب پاور فیلئر ہوتی ہے ڈیورنگ رائٹ کین ریزلٹ ان کرپٹڈ ڈسک. Failure after writing one block but before writing the second in a mirror system. Such corrupted data must be detected when power is restored. Recovery from corruption is like recovery from failed disk. NVRAM helps to efficiently address detected potentially corrupted block. Otherwise, all blocks of disk must be read and compared with mirrored parity blocks. There we have another issues like latent failure, data scrubbing and hot swapping. Latent failure سے کیا مراد ہے کہ اس میں جو ڈیٹا پہلے رائٹ کیا جاتا ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ لاس ہو سکتا ہے. ایون آپ کی جو ایک فائل ہے وہ لاسٹ ہو. ڈیٹا اسکربنگ کا مطلب ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ کنٹینیو اسکین کرتا رہتا ہے لیٹنٹ فیلئر کے لیے اور اس کو ریکور کرتا ہے کاپی یا پیریٹی سے. تھرڈ از اے ٹرم وچ از ہاٹ سویپنگ. Replacement of disk while system is running without power down, supported by some hardware RAID systems, reduces time to recovery and improve availability greatly. تو ہارڈ سویپنگ کا مطلب ہے کہ آپ کا سسٹم اپ اینڈ رننگ ہے, آپ اس میں سے ایک ہارڈ ڈسک کو اتار کے دوسری ہارڈ ڈسک لگا سکتے ہیں اور اس طرح آپ کا جو ریکوری ٹائم ہے وہ کم ہو جائے. Maintain spare disks which are kept online and used as a replacement for failed disks. Immediately on detection of failure reduces time to recovery system. اس وجہ سے آن لائن رکھی جاتی ہیں کچھ ڈسک. اگر آپ کا سسٹم فیل ہو جاتا ہے, کرپٹ ہو جاتا ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وی ہیو نمبر آف ہارڈ ڈسک ٹو ریسٹور فرام. یہ کمپیریزن ہے ڈفرینٹ ریڈ لیولز کا. ریڈ لیول 0 سے لے کے 1, 5, 6 اور 10 تک ایون. تو اس میں منیمم ڈسک جو ہے وہ کتنی ریکوائرڈ ہے, اس میں جو اسٹرپنگ ٹائپ ہے وہ کون سی ہے, اس میں فالٹ ٹالرنس کتنی ہے, بینیفٹس, ڈس ایڈوانٹیج اور ان کی فگر اور اپلیکیشن کو ڈسکس کیا گیا. تو لائک یہاں پہ ریڈ لیول جو 0 ہے اس میں اسٹرپنگ ہوتی ہے, منیمم ریکوائرڈ ڈسک 2 ہیں. ریڈ 1 میں مرر ٹیکنالوجی ہے اور منیمم نمبر آف ڈسک جو ہے وہ 2 ہیں. ریڈ 5 میں اسٹرپنگ تو ہے بٹ وتھ پیریٹی ہے اور اس میں جو نمبر آف ڈسک ریکوائرڈ ہیں وہ 3 ہیں. ریڈ لیول 6 کے اندر اسٹرپنگ ہے وتھ ڈبل پیریٹی اور اس میں 4 ڈسک یوز ہوتی ہیں اور اس میں جو فالٹ ٹالرنس ہے اپ ٹو 2 ہے. ریڈ لیول 10 mirroring اینڈ اسٹرپنگ, 1 ڈرائیو ان ایچ سب ارے. تو اسٹرپنگ, مررنگ اور پیرالل ایکسیس اور انڈیپینڈنٹ ایکسیس کے لحاظ سے یہ لیولس ہیں. لیول 0 اسٹرپنگ پہ ہے, 1 مررنگ پہ ہے, 2 اور 3 جو ہے پیرالل ایکسیس پہ ہیں اور انڈیپینڈنٹ ایکسیس 5 اور 6 کے اوپر ہے. اور یہ ساتھ میں ان کی اپلیکیشنس ہیں. جو ریڈ لیول 0 ہے اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہائی پرفارمنس فار نان کریٹیکل ڈیٹا اٹ ول پرووائڈ.
اور میررنگ ہوتی ہے ریڈ لیول 5 کے اوپر. اس میں یوز ہوتی ہیں سسٹم ڈرائیوز یا کریٹیکل فائلز یا آپ کا جو ونڈوز یا آپریٹنگ سسٹم کا سیٹ اپ ہے وہ ان ڈسک کے اوپر رکھا جاتا ہے. Independent access RAID level 5 and 6 application requiring extremely high availability. تو ایسی سروسز جہاں پہ آپ نے ہائی اویلیبلٹی پرووائڈ کرنی ہے وہاں پہ یہ ریڈ لیول 6 یوز ہوتا ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا سب سے پہلے ڈسک اسٹوریج ڈفرینٹ جو ہرارکیز ہیں اسٹوریج کی ان کو ڈسکس کیا. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ ریکارڈ کیا ہوتا ہے, بلاک کیا ہوتا ہے, اور جو فائلس ہیں وہ کسی بلاک کے اوپر کیسے آرگنائز ہوتی ہیں. ہم نے آپریشنس کو دیکھا فائلس کے اوپر, ان آرڈرڈ آرڈرڈ فائلس کو دیکھا, ہیش فائلس کو دیکھا, اور اینڈ میں ہم نے ریڈ ٹیکنالوجی کو دیکھا اور ریڈ لیول جو ڈفرینٹ ریڈ لیولس ہیں ان کو ڈسکس کیا. اور ساتھ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کون سا ریڈ لیول کس ایپلیکیشن میں ریکوائرڈ